Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. This is class 4th subject science chapter number 3rd. Our today's topic is adaptation in animals. To know about adaptation in animals. What actually adaptation is? Adaptation is a biological mechanism. ये सिर्फ जानदार चीज़ों में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. एडाप्टेशन जिसे हम सलाहियत बोलते हैं या मुआफ़क़त बोलते हैं, जो हर एक जानदार या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है, जिसकी बदौलत हर एक जानदार चीज़ अपने आप को ज़िंदा रखता है, अदरवाइज दे विल डाई. सो व्हाट इज एडाप्टेशन? ए स्पेशल फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स body which helps them to adjust according to the changing conditions of the environment is called adaptation. It's called adaptation. Look at the pictures below. यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें देखते हो कुछ जानवरों की. Lion, zebra, pigeon, camel. Is there any kind of difference among these animals? There is a lot of difference among these animals. The difference of the color, the structure of their body, the shape of the mouth of these animals, है ना. यहाँ पे आप बहुत सारा फ़र्क इनमें देख रहे हो. एक तो उनका ये जिस्म जो है अलग अलग तरीक़ों में बना हुआ है, उनका रंग जो है ये भी अलग अलग है. अब अगर इनका मुंह देखोगे ये भी अलग है, अब इनकी टांगें ये भी अलग अलग है ना. So what are these? Actually these are the adaptation, these are the features which help them to adjust according to the changing conditions of the environment. There are a number of adaptations in these animals, and they live in different places, and they eat different kinds of food. It is because of the difference of the adaptation of these animals. We have already read how plants adapt themselves to their surroundings. हमने पहले भी पढ़ा, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है और समझा कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस तरह उगते हैं और किन माहौलों में और किन जगहों में. जिस तरह हमने पढ़ा एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो पानी में पेड़ पौधे उगते हैं वो ज़मीन पे नहीं उगते हैं, और जो ज़मीन पे उगते हैं वो पानी में नहीं उगते हैं, क्योंकि इनमें वो सलाहियत नहीं होती है, इनमें वो सलाहियत नहीं होती है. When animals are not properly adapted to their surroundings, they either die or move to places where they are better suited and can easily adjust themselves. जो मैंने आपको पहले भी समझा और पढ़ा है, जिन जानवरों में या जिन ऑर्गेनिज्म में ये सलाहियत नहीं होती है, या तो वो मर जाते हैं या तो वहाँ से भाग जाते हैं. और जिनमें ये सलाहियत होती है वो हर माहौल में जो भी इनके सामने आने वाला होता है या जो भी इनके सामने आता है, तो उस माहौल में वो अपने आप को जमाते हैं और वो वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं. अदरवाइज दे विल डाई. या तो अगर इनमें ये सलाहियत नहीं होती तो वो मर जाते हैं. The natural surroundings of the animals in which they live is called habitat. So what's habitat? The place where the living organisms can survive or live is called its habitat. वो जगह जहाँ पे जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, अपनी सारी उम्र गुजारते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. जिस तरह इंसान हम अपने लिए घर बनाते हैं, हम घर के अंदर रहते हैं, हम घर के बाहर नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें खतरा होता है फ्राम एनिमीज, फ्राम वाइल्ड एनिमल्स, फ्राम थीव्स, फ्राम हीट, फ्राम कोल्ड, फ्राम रेन, फ्राम डस्ट, फ्राम इंसेक्ट्स. सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ सेफ इनसाइड आवर हाउस. आवर हाउस इज आवर habitat. The habitat of the fish is water. The habitat of the lion is forest. Pigeon lives in a nest. So on the basis of habitat and their features and their adaptations and their food, we have to categorize these animals into different groups. So our next topic is adaptation to environment. On the basis of these adaptations or features, we have to categorize these animals into different groups. Number 1, terrestrial animals. Animals that live on land, on the surface of ground, or in burrows below the surface of the ground are called terrestrial animals. They breathe with the help of lungs. They have well developed senses like the sense of hearing or smelling. They help them hunt for food and protect themselves. They have strong legs to walk on, run fast. जिस तरह हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें जो ज़मीन पे रहते हैं या ज़मीन के अंदर रहते हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास भी एक निज़ाम होता है, मैकेनिज्म होता है, जिनको हम लंग्स बोलते हैं, जिसकी बदौलत ये सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, जो इनको ज़मीन के अंदर रहने में
सांस लेने में मदद देते हैं, और इनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं. व्हाट आर दी सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड? which helps them to feel different kinds of sensations. For example, eyes, ears, nose, skin, and tongue are called sense organs. These sense organs help them to perform different kinds of functions and feel different kinds of sensations. Sensation of sight, sensation of hearing, sensation of smell, sensation of touch, sensation of feel, whether it's heat, cold, or pain. Animals like tigers, elephants, bears or wild animals that live on land. ये wild animals ये जंगल के अंदर होते हैं, यानी फॉरेस्ट में रहते हैं. Why these animals are called wild? Because wild animals are they live in forests, and these animals are harmful and dangerous for other organisms, and these animals are not helpful for us. That's why we keep these animals away from our homes. So other animals are called domestic animals. For example, horses, cows, pigs, dogs. Why these animals are called domestic animals? Because we tame, we rear these animals in our homes or in our farm lands. And these animals are helpful for us. We get different kinds of benefits for these animals, and they make our work easy. They help us in our works. यहाँ पे आप देख रहे हो कैमल. लुक एट द कैमल. डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल, जो कि डेजर्ट में रहता है, जो कि रेगिस्तान में रहता है, यानी कि रेतली ज़मीन में रहता है, उस पर चलता है, क्योंकि इसमें ये सलाहियत होती है कि वो उस इलाके में रह सकता है. इसके पास क्या होते हैं, एक तो इसकी चमड़ी जो है ये मोटी होती है, और इसके ये टांगे जो होती हैं लंबी होती है, और उनके फीट जो होते हैं ये पैडेड होते हैं. दे हैव पैडेड फीट्स विच हेल्प्स देम टू रन fast on the surface of the desert or on the surface of the sand. Other animals cannot run fast as camel, because camel have such a kind of adaptation which helps them to live in this condition, in these conditions of the desert, in these conditions of the desert or the desert areas, which is used when they do not find food and water. Another feature on the back of camel is which we call this structure hump. Hump stores food and water. If there is shortage of food for the camel in the desert areas, so camel have to utilize this fat for many days. So camel can survive without food and water for many days in these deserts. So this is the adaptation of the camel which helps them to survive without food and water. Animals like polar bear, which live in cold places, have thick furs to protect themselves from cold. इसी तरह अगर हम polar bear की बात करें, what do you mean by polar bear? Polar bear means bear that lives in the polar regions. We have two poles, North Pole and South Pole. These areas and these polar regions are very cold. They have cold climate. They remain snow covered throughout the year. That's why these animals are called polar animals or polar bear. Polar bear have thick fur on its body to protect themselves from the extreme cold. इसके जिस्म पे ये फर जो होता है वो मोटा होता है, या जिसको हम हेयर्स बोलते हैं, वो बहुत ही मोटे होते हैं और घने होते हैं, जो कि इसको सर्दी से बचाते हैं. इस तरह एक और परिंदा वहाँ पे एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम पिंगविन्स बोलते हैं. Penguins living in freezing conditions have thick layer of the fat called blubber. इस तरह एक और परिंदा होता है जो फ्रीजिंग कंडीशन में रहते हैं, फ्लाइटलेस, जो कि उड़ते नहीं हैं. उनके जिस्म के अंदर, चमड़ी के अंदर एक फैट होता है, चर्बी होती है, जिसको हम ब्लबर बोलते हैं, विच कीप्स देमसेल्व्स वार्म इन कोल्ड कंडीशंस. दे सिट क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म. और एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं तो चिपके बैठते हैं, जिससे अपने आप को गर्मी देते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं सर्दियों में. सो दिस इज ऑल अबाउट adaptation in these animals and adaptation to environment. Hope you will understand. Goodbye.